to me मतलब architecture is something that's not very stagnant as an approach. It's continuously a learning path and it's continuously you experience a lot of new things continuously. So definitely जब नई चीज़ें आप देखते हैं समझते हैं तो उसके साथ से चैलेंज और एक्सपीरियंस भी उनका नया होता है. सो इंस्टेड ऑफ के आप ग्रेजुएट करके एक नए नए कदम रखते हैं मार्केट में और हम ये एज्यूम करें कि जी हमारे सीनियर्स भी ऑलरेडी मार्केट में हैं, बिल्डर्स भी मार्केट में हैं, डिफरेंट आर्किटेक्ट्स और मार्केट में हैं, जो भी हैं, और बजाय कि उनका एक इनडायरेक्ट हम प्रेशर ले लें कि जी हमें अपना जगह नहीं मिलेगी या कोई काम नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है. बिकॉज द मार्केट इज़ कॉन्टीन्यूसली ऑन द ग्रो डिमांड. बेसिकली जो मसला आ रहा है इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, जो कि एक नए आर्किटेक्ट को एग्जैक्टली आफ्टर द ग्रेजुएशन नहीं हो पाता. वो ये समझ रहा होता है कि बिकॉज आफ्टर 5 years ऑफ एजुकेशन वो बड़ा एक हाइपोथेटिकल सी दुनिया में होता है और एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल सी दुनिया में होता है, तो वो समझता है कि शायद आउटर वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द सेम वे. येस, टू सम एक्सटेंट येस, आउटर वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द सेम वे, बिकॉज स्पेशली जो हमारे के आर्किटेक्चर हो रहा है टूवर्ड्स इन विच द बंजाइगा इज़ ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग इन इट, तो वो आप कह सकते हैं जैसे इट इज़ हाइपोथेटिकल एंड इट्स वो रियलिटी हाइपोथेटिकल से रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होके आए हैं. It is to an extent, but you have to put an effort for each and everything, और हर effort के हिसाब से ही आपको उसका result भी मिल जाता है. So it's nothing to get too much worried about it. and ये और दूसरा don't think so शायद, लेकिन architecture with its age ही एक beautification और simplicity और nature की तरफ जाता है. तो आई थिंक सो इट्स अ प्रोसेस और एक लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप बैचलर्स करें और आपके माइंड में होगा कि जी बस नाउ इट्स माई टाइम एंड आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड. इट विल टेक एजेस एंड इट विल टेक टाइम टू रीच अ सर्टेन लेवल. To me, Banjaiga is a very good platform. To me, I would rather suggest extraordinary platform which encompasses a good architecture and promotes a good architecture, or you can say मतलब बड़ा एक जो uniqueness of an architectural element and design which we study in our bachelor's life, उस चीज़ की reality में जो description है और इस reality की जो translation है, to me Banjaiga is that platform which is continuously एक an eye-opening thing है कि जी architecture, what are the wide perspectives of architecture to us in our life. So I think Banjaiga is doing a very great and very good work for architects as well as the promoting the design of their other architects also.